Hello and welcome to Jagran High Tech. It's a very exciting, very different sort of a situation over here. We are in a football field. I've got Ala with me and I've got Ravi with me from HMD. We are here for a very exciting phone launch and काफी अलग-अलग बातें होने वाली हैं. थोड़ी सी जल्दी करेंगे इस conversation को खत्म क्योंकि एक football match शुरू होने वाला है और हमने रोक दिया बीच में. So welcome to the show, guys. Thank you. Thanks, Thank Konark. you very much. You know, if I were to talk about Ala, HMD's presence in India in terms of, what is the investment strategy in terms of how seriously are we taking and talking about the market? What launches can we expect in the future from HMD? Thanks very much for taking the time. And as you know, HMD in India has been present for many years. And today we're really doing very good, especially in 2024 globally, but especially in India, which is today our biggest single market. So definitely India is very, very critical for HMD. Right. As you can see, this is today the launch of the fourth HMD branded device this year only. More to come. We have a particularity in this device that it's really conceived and from a product standpoint really thought specifically in India. So we want to do more things in India. Also from a production, from an operational standpoint, we see India as becoming very competitive. Right. We've started to bring more production in India for export. We're going to continue that. And I would say when I look at the way the economy, the ecosystem, and to some extent, what's happening in the world is going, I think India is a great place to be. Yeah. Interesting. Ravi, over to you now. I mean, we've seen HMD collaborate with FCB. That's the whole idea behind doing a football event like this, right? India की अगर बात करूँ तो यहाँ पे आपने IPL में I think एक टीम के साथ collaborate किया था और कैसी exciting opportunities हो सकती है इंडियन मार्केट के लिए, इंडियन ऑडियंस के हिसाब से. So इंडियन ऑडियंस में जैसे मैंने बोला कि इंडिया में क्रिकेट और बॉलीवुड दो चीज़ें जो है वो सबसे ज़्यादा चलती हैं. और अगर हम देखें जब हमने HMD की जर्नी जो स्टार्ट करी तो हमने राजस्थान रॉयल्स के साथ IPL में टाई अप करा. उसके अलावा अगर आप देखें तो हमने जो वुमेन क्रिकेट टीम है उसके साथ भी टाई अप करा. और बॉलीवुड में जब हमने क्रेस्ट लॉन्च करा था तो सानिया मल्होत्रा थे या जो हमारे जिमी शेरगिल थे. तो एक ऐसा भी इंडिया में जो जेनजी है जो कि जिसकी की फुटबॉल फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है. और स्पेशली अगर मैं बार्सिलोना की बात करूँ तो बार्सिलोना की फ़ैन फॉलोइंग अगर इंडिया में देखें तो दुनिया में सबसे ज़्यादा आती है. और इसलिए हमें लगा कि ये एक बहुत अच्छा कोलैबोरेशन होगा जो हम बार्सिलोना के साथ करेंगे. एंड इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट कि फैन फॉलोइंग कैसी है. जो बार्सिलोना की फिलॉसफी है कि जिस तरीके से वो इनोवेटिव प्ले फील्ड पे लेके आते हैं, जो आर्टिस्टिक फ्लेयर एक उसमें होता है, वही सेम चीज़ जो है वो HMD के अंदर है जो हम अपने प्रोडक्ट्स और हम अपने सर्विसेज के थ्रू लेके आते हैं. Interesting. So, I won't hold this conversation for very long because there's a football match. If you could tell us... We are waited for that match. We are all ready and excited for it. If you could tell us that one particular bit, that Fusion really would change things around for HMD here at a global level as well. And one thing that resonates very closely to you, in particular about the Fusion today. I think the best thing that comes to my mind is the way we presented it today, which is really 3 products in one. I mean, it's honestly a fantastic, value proposition. As a consumer, you just don't get one device. You get something that, you can change as you want and, different use case, different time of the day, different mindset. And honestly, that's super unique. The other thing is in terms of the concept and what we brought to life, that flexibility and that creativity that it can unlock. I wouldn't be too surprised if we see a lot of people having, a lot of ideas in India that take that platform and use it and create something even that we can't imagine now. Correct. I mean, that's because, it's coming with a ready-to-use platform. So anyone is welcome and can use that and create. Just take a 3D printer and design something around it. Yeah, that's all it takes. Absolutely. And Ravi, now last question to you. We as a country, we are known for innovations in a very lack of a better word, जुगाड़ बहुत अच्छे से करते हैं हम इंडिया के अंदर. And इस device से वो possibilities because of its modularity are immense, right? Somebody can just connect any other device to it, make probably a projector like we've seen in some of the earlier phones from some other brands, and the possibilities are endless, right? What do you think is that one particular thing Indian context में कि जुगाड़ की बात है या innovation की बात है, किस चीज़ से fuel हुआ है ये idea? हमने काफ़ी रिसर्च करी. जैसे हमने बोला कि हम यंग और एस्पायरिंग ब्रांड हैं और हमारे टारगेट ऑडियंस जो हैं कि वो इंडिया में क्या देखते हैं आजकल. तो
जैसे मैंने अपनी प्रेजेंटेशन में बताया था कि वो देखते हैं कि सेल्फी इज द बिग ड्राइवर फॉर देम एंड हाउ कैन यू इनोवेट अराउंड कैमरा एंड सेल्फी। तो हमें आइडिया वहाँ से आया कि हम इसमें क्या मीनिंगफुल उनके लिए करें विच इज नॉट जस्ट जुगाड़ बट इज अ रियल मीनिंगफुल इनोवेशन जो हम अपने कंज्यूमर्स को ले आए। तो आइडिया सारे वहाँ से आए। फिर हमने दूसरा जो एक सेगमेंट देखा कि इतने सारे कैजुअल गेमर्स हैं जो अपने डिवाइस पे हुक्ड हैं, तो उनको कैसे हम एक इंटीग्रेटेड एक्सपीरियंस लाएं जिसके अंदर डिवाइस भी है, गेमिंग कंट्रोलर भी है, और जो हमने टाई अप करे हैं एप्टॉइड के साथ कि उसको गेमिंग के जो ऑप्शंस हैं वो सारा एक प्लेटफॉर्म पे मिले। तो ये सोच हमारी सिर्फ कंज्यूमर रिसर्च से निकल गया। Interesting. All right, I won't keep you guys holding for very long. Thank you so much for joining us, Ala. Thank you, Ravi. Always a pleasure.